हेलो फ्रेंड्स मुझे स्वागत जनाऊँ लेट्स गेन एजुकेशन को चलतु आज आम डिस्कस करवा बीएड फर्स्ट सेमिस्टर आईसीटी यूनिट 2 आज आम डिस्कस करवा चलो देखा आज आईसीटी यूनिट 2 रे कौन रही आमर यूनिट 2 रे आमर रही आईसीटी इन एजुकेशन देखो तार कंटेंट गुड़िक देखा मैंने आम पेपर में कौन कौन पढ़ा यूनिट 2 रे देखा चलो तार कंटेंट गुड़िक देखो फास्ट अच्छे मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स देन अच्छी फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस then individualized instruction, then programmed instruction, then principle of programmed instruction, then styles of programming, then developing a program, then advantages of programmed instruction learning, then limitations of programmed learning, 2.5 challenges in integrating ICT in school education. तो देखो फास्ट आम चलते देखा मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन देखो तार कौन रही इंट्रोडक्शन देखो तार रही एजुकेशन व्हाट एवर बी इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स learning is modification of behavior as a result of past experience or proactivity. Behavioral modification arising out of learning may be cognitive, affective, sensory, motor, or an amalgam of these in different proportion. Human learning may occur at different level of complexity. Whatever be the level of learning or type of learning, the basic learning experiences or the inputs of learning have to reach the pupil through his senses. देखो एथरे कौन कहुई ना ना आमर जो आम जो इनएक्टिविटी परिवर्तन करूँ शिक्षण उत्पन्न जो आचरणगत परिवर्तन हुए तो ज्ञानगत प्रभावशाली संवेदनशील मोड्र किंतु कि विभिन्न अनुपातर जो एमएलएम हो पारे शिक्षण विभिन्न जटिलता स्तर में हो पारे जहाँ शिक्षार स्तर कि मौलिक शिक्षण अभिज्ञता बा शिक्षार इनपुट हो पारे इंद्रिय माध्यम कौन हुए ना छात्रों निकट में पहुँचा पड़ो जमी बुद्धि सहित बुद्धिर जो सेन्सर महत्व शिक्षा एक उपाय इंद्रिय गुड़िक शिक्षण ज्ञानगत व्याख्यात्मक दक्षता ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण मन हुए कारण कौन ना बुद्धि में किसी हो पार ना जहाँ इंद्रिय माध्यम विस्तार हो न था आम इंद्रिय गुड़िक देखिए हूँ कौन ना ज्ञान आहरण कर द्वारा तो यही ग्रहणकारी यंत्रक जो शैली गुड़िक से कार्य भिन्न भिन्न अटंती देखो ग्रहणकारी यंत्र जो शैली आमको नहीं जो तथ्य बा संवेदनशील इम्प्रेशंस खावा दिए मैंने देखा था खाप खुआवा तो तार द्वारा कौन होता है शिखार जो प्राकृतिक उपाय मुख्यतः इंद्रिय गुड़िकर जो सेन्स आम रही तो निजुक्ति मध्यम प्रत्यावर्तित कर देखो इम्पोर्टेंस ऑफ सेन्स एलॉन्ग विथ द इंटेलेक्ट और विटल टू लर्निंग देखो इन वन वे सेंसेस अपीयर टू बी इवन मोर इम्पोर्टेंट देन कॉग्निटिव इंटरप्रेटेटिव एबिलिटीज फॉर लर्निंग एज देयर कुड बी नथिंग इन द intellect which has no been transmitted through senses तार देखो तार केतोड़े के देछि जेमती देखो देखो एक्सपीरियंस एंड रिसर्च हैव नो दैट द फॉलोइंग फिगर्स आर जनरली वैलिड देखो तार केतोड़े देछि जेमती कि 10 देछि परसेंटेज थ्रो टेस्ट जेमती 1.5% थ्रो टच देछि 3.5% थ्रो स्मेल देछि तापर आप कौन देछि ना 11.0% थ्रो हियरिंग देछि 8% थ्रो देछि साइट देछि we remember देखो ये सब हमें मन रखा देखो कौन ना 20% of what we hear 30% of what we see 50% of what we see and hear 80% of what we say 90% of what we say and do देखो तार देछि कौन ना एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन देखो तार कौन देछि देखो एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन देखो तार फर्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना हेल्पफुल इन रेनफोर्सिंग मेमोरी सेकेंड कौन देछि तार ना पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन लिटरेसी एंड लैंग्वेज लर्निंग थर्ड देछि प्रोवाइड ए वेराइटी इन टीचिंग एंड लर्निंग तब देन देछि मेक्स लर्निंग क्रीज फुल एंड होल देन मेक्स लर्निंग लाइफ रिलेटेड देन देछि एड्स डेप्थ एंड क्वालिटी टू सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस देन देखो कैटर्स टू इंडिविजुअल नीड्स देछि देन देखो रेनफोर्स लर्निंग देछि then देछि remove non essential देछि then देछि makes learning durable enduring the permanent देछि then देछि देखंतु enlarges the range of experience then देछि holistic approach to instruction then देखंतु कोन देछि हमरो सॉरी 13 नंबर टा बते देइ लिखि देछि तो सेटा सॉरी काट दे कि भूल हो जाइछि मिस्टेक द ब्रेक्स मोनोटरी टू एंड ब्रिंग्स वेराइटी टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देन देखंतु सुटेबल टू चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफरेंस तापर देखंतु कोन ना कांसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स देखंतु एतरे कोन रहि हमरो ना लर्निंग इज ए एक्सपीरियंस एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इनफॉरमेशन जो इनफॉरमेशन पे हमर कोन ना लर्निंग गोटे कोन ना एक्सपीरियंसिंग हमर गोटे दरकार सब प्रत्येक दिन पे हमर सेटा एक्सपीरियंस गोटे माने शिक्षण क्षेत्र में एक्सपीरियंस गोटे निहाती दरकार इनफॉरमेशन पे ताको की कहथिले ना अल्बर्ट आइंस्टाइन को मतरे जे लर्निंग इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इनफॉरमेशन नेक्स्ट देखंतु क्लासरूम
communication and communicative skill for teachers and students. देखो the better the classroom interaction, the better would be the teaching learning. देखो कौन रही ना, teaching is an interaction process between a teacher and taught. But have you ever observed a class when the teaching is going on? In most of our classrooms, except verbalism goes on in the name of good teaching. Then देखो throughout the class time period, generally 45 minutes period, the teacher goes on explaining ideas, concept, etc., or simply lectures about various things. The students are merely expected to listen passively. Speaking in the class by the students is generally considered to be an indecent behavior. Only occasionally a few students will be given a chance to answer to questions posed by teacher. Suppose they don't answer, teacher once again repeat her explanation with redoubled energy. This kind of teaching is called direct teaching. चलो देखिबा डायरेक्ट टीचिंग कोन हमरो रही छि देखि देखंतु एतरे कोन रही छि देखो शिक्षादान होउछि जने शिक्षक माध्यम एक पारस्परिक प्रक्रिया एवं शिक्षादान चलता बेले आप एक श्रेणी पालन करिसेंति कि आमर देखो अधिकांश श्रेणी कोठरी गुड़िक कौन होता है ना अत्यधिक शिक्षादान नाम चली थाए क्लास समय हो तार अवधि हो साधारणतः जमी 45 मिनिट होता है गोटे पीरियड आमर साधारणतः 45 मिनिट होता है शिक्षकों धारणा इत्यादि व्याख्या करती आ विभिन्न जिनिस विषय केवल वक्तता करती छात्र मैंने केवल कौन निष्क्रिय भाव में तालिकाभुक्त करेंगे बोली आशा कर छात्र मान द्वारा कौन ना क्लास कहवा साधारणतः एक आचरण बोली विवेचना करा जाए बेले बेले कौन हुए ना अल्प किसी छात्रों को शिक्षकों द्वारा दि जाइथिबा प्रश्नर उत्तर देवा सुजोग दि जावा उचित धरा जाओ से उत्तर दियंती नहीं शिक्षक पुनर्बार 2 गुण शक्ति सहित तार व्याख्या को कौन करिया उचित ना पुनरावृत्ति करिया उचित एही प्रक्रिया शिक्षादान कौन ना प्रत्यक्ष शिक्षादान कहा जाए पिलाटी जे पर्यंत न बुझी थाए ताको सेते थर ताको बुझाइबा उचित कारण ए जो शिक्षादान को प्रत्यक्ष शिक्षादान कहा जाए प्रत्यक्ष शिक्षादान फलप्रदता कौन ना जानिया पई अनेक गवेषणा करा जायछि एवं कौन ना बहुत इफेक्टिव प्रभावशाली बोली जना पड़ी एठारे कारण होछि कौन शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे सक्रिय अंशग्रहण करिया परिवर्ते छात्र माने पास श्रोता भाव में रही था शिक्षागत मनोविज्ञान आमको कही थाए जे जेतेबेले छात्र माने सेठारे एक आवश्यक सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती सेतेबेले सेमाने शिखी थांती तार देखंतु माने फॉर एग्जांपल देखंतु ऑब्जर्व ए साइंस क्लास वेयर द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड देखो टीचर कौन कहते गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पीपल कहते गुड मॉर्निंग टीचर द टीचर सिट डाउन So has anyone drawn water from the well using a bucket? Pupils, yes sir, I have drawn water from the well when I went to my grandma's house. Teacher, is it? Have you noticed any change in the weight of the bucket when it is inside the water and when it is out of the water? The people think for few seconds. When the bucket is inside the water, it seems to be light, but when the bucket comes out of water, it is heavy. The teacher come very good, you are right. When the bucket is inside the water, it seems to lose some weight. This is called apparent loss of weight. So by the way, have you all experienced this apparent loss of weight of the bucket while drawing water from the oil? People, yes sir, we have experienced it. Teacher, very good. Now we are going to study a principle relating to this apparent loss of weight in water and other liquids. The lesson continue like this. Here the lesson is found to be interesting. Why? Here you might have noticed that his lesson proceeds as an interaction between the teacher and pupil. This kind of teaching is called as indirect teaching. ए जो teaching हमर थिला कोन ना एटा थिला हमर direct teaching. देखंतु Traces variable देखंतु those already present when in classroom learning comments the characteristic of teacher and learner. Context variable देखंतु description of the classroom environment. Next देखंतु the investigator studies देखंतु देखो तार पॉइंट गुड़िक देखो फर्स्ट पॉइंट देखो टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन सेकंड वन इज प्यूपिल इंटरेक्शन थर्ड वन इज इंटरेक्शन विथ वेरियस मटेरियल एंड द फोकस मेनली देखो तार जो ए देचे पॉइंट देखो कॉग्निटिव एलिमेंट्स जोटा कि हमर इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स रे बी देखो अफेक्टिव एलिमेंट्स इमोशन एटसेट्रा तार सेकंड थर्ड देखो फिजियोमोटर एलिमेंट्स जोटा कि हमर पोस्चर्स गेस्चर्स मूवमेंट्स देन देखो एक्टिविटी देन देखो कंटेंट लेसन रिलेटेड टास्क देन देखो फिजिकल एनवायरनमेंट देन रोची हमर सोशियोलॉजिकली इंस्ट्रक्शन जो कि रोल रोचे सेक्स रेस एटसेट्रा रोची देखो टीचर बिहेवियर देखो कौन अच्छे आमर देखो टीचर बिहेवियर रे आमर रोची द टीचर बिहेवियर दस इंक्लूड्स वर्बल बिहेवियर स्पीकिंग आस्किंग क्वेश्चंस लेक्चरिंग एक्सप्लेनिंग गाइडिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग एटसेट्रा नॉन वर्बल बिहेवियर हिज मूवमेंट्स इन द क्लास गेस्चर्स that he uses at different occasions. Both these type of behaviors make the student achieve the desired learning experience. देखो तार दो देछि देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन देखो केतरे कोन रहिछि ना द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन आर देखो फर्स्ट देखो टू ऑब्जर्व द टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर ऑब्जेक्टिवली सेकंड देखो टू प्लान स्ट्रेटजीज in order to remedy his behavior so as make it suitable
for the teaching learning situation. Third one देखो to identify the drawbacks of the teaching learning program and then to suggest remedial measures. Then देखो आमर कौन आसला ना interaction analysis देखो interaction analysis रे कौन अछि देखो first देखो in short interaction analysis is a technique of studying teachers verbal behavior. Then देखो the term interaction analysis is a label that refers to any technique for studying the chain of classroom events in such a way that each event is to taken into account. नेक्स्ट देखो आमर रही कौन ना एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालाइसिस इंक्लूड देखो एथरे कौन रही चलते देखा ना देखो फर्स्ट रही ए सेट ऑफ कैटेगरीज इज डिफाइंड क्लियरली देन देखो ए प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्जर्वेशन एंड ए सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स फॉर कोडिंग देन देखो स्टेप्स फॉर tabulating the data in order to arrange the display which aids in describing the original events and then देखो suggestions which can be followed in some more common applications. तापर देखो आम रही कौन मेथड ऑफ इंटरेक्शन एनालाइसिस देखो एथरे कौन कह ना अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एल ओवेर इटाल 1971 ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स may be classified into two basic kinds sign and category. देखो फर्स्ट देखो साइन सिस्टम्स देखो एथरे कौन रही हमर इनसाइड सिस्टम ए लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स आर गिवन द बिहेवियर्स आर मार्क्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशनल पीरियड even if the behavior occurs number of times. Then देखो in this system observation are made to check the occurrence of any behavior during a period of time रे हम बिहेवियर गुड़िक जना पड़ी थाए. नेक्स्ट देखो कैटेगरी सिस्टम देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टीचर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिटी ईच बिहेवियर यूनिटी इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज. The category system differs from sign system in the sense that the sequence of occurrence of behavior and the frequency of the occurrence are noted here. Then देखो basic technology assumption of interaction देखो एथरे कोन रही छी the various theoretical assumptions which are basic to very idea of interaction analysis are as follows. देखो first देखो तारो the role of the classroom climate is crucial for the learning process. Parkins 1956. Then देखो teachers classroom behavior in particular exerts a crucial influence on the pupil. Then देखो children tend to be conscious of a warm acceptance by the teacher and to express greatest foundations for the democratic teacher. Parkins 1950. Then देखो हमर कोन आसिला देखो तापर आसला फ्लांडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालाइसिस देखो एथरे कोन रही चलते देखा देखो ड्यूरिंग द ईयर 1959 ए कैटेगरी सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालाइसिस वाज डेवलप्ड बाय नेड ए फ्लांडर्स एंड अदर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Minnesota of all the techniques of interaction analysis जेमती ओस्कार ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड फ्लांडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम जेमती फ्लांडर सिस्टम इज इजी टू हैंडल एंड कैन बी यूज्ड एज ए फीडबैक टेक्निक इन टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग रो फीडबैक टेक्निक जो सेटा करा जाय हैंडल करा जाय. नेक्स्ट देखंतु कोन रही तार पॉइंट गुडी को देखंतु केते बडे रही फर्स्ट देखंतु अजम्पशन स्टेड बाय फ्लेंडर देखंतु एथरे कोन रही चलंतु देखिबा देखंतु एथरे कोन रही ना इन ए नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन इट इज वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच इज प्रीडोमिनेंट. देखो कौन रही ना आम शिक्षक जो कथबार्ता कौन ना दुईटी भाग विभक्त कर देखो गोटे नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन कौन होती ना गोटे वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच इज प्रीडोमिनेंट रही. सेकेंड देखो कौन रही आमर द क्लासरूम वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ हायर रिलायबिलिटी. देखो एथरे कौन रही देखो नेक्स्ट देखो कौन रही आमर इन द क्लासरूम नॉन वर्बल बिहेवियरल आल्सो अकर्स बट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड वेरी एक्युरेटली जोटा कि आमर मेजर करी होइनी. देन देखो टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर हाईली इन्फ्लुएंस द लर्नर्स बिहेवियर. देन देखो टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड थ्रू फीडबैक. Then देखो देती कौन ना फ्लांडर इंटरेक्शन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ 10 कैटेगरीज ऑफ देयर 7 डील विथ टीचर टॉक व्हाइल 2 डील विथ स्टूडेंट टॉक. लास्ट कैटेगरी मेजर साइलेंस और कंफ्यूजिंग. देखो टीचर टॉक देखो कौन कह जाई देखो टीचर टॉक 7 कैटेगरीज 1 to 7 दे जाई. देन प्यूपिल टॉक दे जाई 2 कैटेगरीज जोटा कि हमर 8 और 9 रे रही. देन देखो साइलेंस और कंफ्यूजिंग इन क्लास एटा कौन फर्स्ट कैटेगरी रे रही 10 कैटेगरी रही 10th कैटेगरी रे रही. देन देखो फर्स्ट देखो टीचर टॉक देखो टीचर टॉक this include teachers verbal behavior in the classroom. This is subdivided into two: indirect influence and direct influence. The first 4 category are under indirect influence and next 3 categories are under direct influence. देखो जोटा हमर indirect influence अछि देखो सेतरे कोन 1 to 4 category रही. फर्स्ट देखो कोन ना accepts of feelings रही, देन रही praises और encourage रही. थर्ड रे देखो accept or uses idea of pupils रही. फोर्थ रे रही ask questions.
देन देखो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन रही 5 6 7 कैटेगरी 5 देखो रही लेक्चरिंग रही 6 गिव्स डायरेक्शंस रही 7 देखो क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी रही नेक्स्ट देखो प्यूपिल टॉक रही देखो एथरे कौन आम देखले ना देखो प्यूपिल कौन रही आमर दिस इनक्लूड्स students response as a result of two teachers talk in classroom. This is divided into two categories देखो एथरे कौन कह ना जो ये प्रतिक्रिया गुड़िक फलाफल भाव में मुख्यतः दुईटी जपरी उच्च विश्वसनीयता सहित शिक्षक और छात्र छात्री श्रेणी गृहर मुख्यगत आचरण पालन कर नेक्स्ट देखो पीपल स्टॉक आमर कौन होता है देखो पीपल स्टॉक आमर कौन ना इनिटेशन होता है आ पीपल स्टॉक कौन पीपल स्टॉक देखो कौन ना रेस्पॉन्स गोटे होता है गोटे होता है इनिटेशन गोटे होची रेस्पॉन्स होता है देखो साइलेंस और कन्फ्यूजिंग देखो एथरे कौन रही ना साइलेंस और कन्फ्यूजिंग इफ देयर इज नो वर्बल बिहेवियर and if your class is totally silent or noise exists people are in confused state this we call it as silent or confused stage देखो example देखो teachers or students non-verbal behavioral drawing on blackboard by teacher, note taking by students, assignments, preparing models, doing practicals on steady behavioral of pupil etc. देखो ये जो गोटे स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे देखो ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है धरबेनि मुझे आपको कही दूसरी तार जोटा राइट होची मुझे कही दूसरी जोटा प्रिंटिंग मिस्टेक है धरबेनि छोटे छोटे जिन देखो नेक्स्ट देखो फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स कैटेगरीज देखो कौन आम फास्ट रही देखो एक्सेप्ट्स फीलिंग्स रही चलो देखिए एथरे कौन रही आमर एक्सेप्ट फीलिंग्स इन ए नॉन थ्रेटनिंग मैनर फीलिंग्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव देन देखो प्रेजेस और एनकरेज रही एथरे कौन रही ना प्रेजेस और एनकरेज स्टूडेंट्स एक्शन और बिहेवियर रेस्पॉन्सेस सच एज नोडिंग हेड सेइंग बेटर गुड गो ऑन कैरी ऑन प्रोसीड फर्दर आर इंक्लूडेड नेक्स्ट देखो एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स देखो आधे कौन रही आमर देखो in developing building clarifying ideas suggested by pupils teacher extensions of pupil ideas are also included but as the teacher brings more of his own ideas into play shift to category 5 then देखो रही कौन ना ask questions रही ask question देखो सेमती रही asking a question about content or the procedures based on teachers ideas with the intent that a people will answer next देखो lecturing रही देखो giving his own explanation expressing facts or opinions about content or putting his own ideas sitting an authority other than a pupil next देखो giving directions देखो directions command imitation or orders to which a pupil is expected to complete देखो next देखो criticizing or justifying authority एथरे कौन रही ना statements intended to change pupil behavior from non acceptable to acceptable pattern pointing someone out stating why the teacher is doing what he is doing extreme self preference then देखो pupil talk response देखो talk by pupils in responses to teachers teacher initiates the contacts or selective pupil statement or structures the situation freedom to express own ideas in limited then देखो pupil talk initiation देखो एथरे कौन रही ना talk by pupils who is they initiate expressing own ideas initiating a new topic freedom to develop opinions and line of thought like asking thoughtful questioning going beyond the existing structure next देखो silence or confusing देखो एथरे कौन रही आमर the short periods of silence and periods of confusion in which communication cannot be understood by the observer then देखो फर्स्ट है हमर ना एनकोडिंग प्रोसेस डिकोडिंग प्रोसेस चलो हम देखिबा इदिटा कोन देखो एनकोडिंग कौन होची ना एनकोडिंग होची द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इज टू मेमोराइज द कोड नंबर्स of the categories the observer sits in one corner of classroom and observes the communication taking place in the classroom and observes the communications taking place in the classroom roughly about every 3 seconds he notes down the category number of the communication he has observed in his data sheet in this way every minute 20 to 25 observations are recorded while doing so he has to follow certain ground rules some of these are listed below देखो ये कौन कहुई जो एनकोडिंग प्रक्रिया देखो ये कौन कहुई ना यही प्रक्रिया प्रथम कौन पदक्षेप होची कौन ना वर्गर कोड नंबर गुड़ी को स्मरण करवा पर्यवेक्षक जो श्रेणी गृहर गोटे कोणे बसी जमी श्रेणी गृह होता जोगाजोग को देखती और श्रेणी गृह होता जोगाजोग को देखती प्राय प्रति 3 सेकेंड से निज डाटा सीट्रे कौन करती ना देखुवा से जो जोगाजोगर वर्ग संख्या को नोट करें प्रत्येक मिनिट्रे ना कौन ना 20-25 जो पर्यवेक्षण रेकर्ड करा बेले किसी निर्दिष्ट नियम अनुसरण करने पड़ी थाए देखो आर भितर तार देखो रूल गुड़िक केते अच्छी तार देखो रूल गुड़िक देखो इन दिस प्रोसेस if the observer is in doubt as to the category number an event belongs to the
belongs to, he should choose the category that is numerically further from category 5 but not category 10 एथरे कोन रहिछि देखंतु देखो एथर कौन यही प्रक्रिया जदि पर्यवेक्षक वर्ग नंबर विषय एक सन्देह करती तेज से एक कौन ना वर्ग को बाछिया उचित जहाँ वर्ग 5 संख्या अधिक दूर में किंतु वर्ग 10 नुहे धरा जाऊ 3 सेकेंड समय मध्य एक अधिक प्रकार जोगाजोग होता है से क्षेत्र में कौन होता है ना समस्त संपृक्त वर्ग संख्या व्यवहार करा उचित होता है देखो एथर कौन सपोज मोर देन वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन occur during a 3 second period in that case all the relevant category numbers should be used. It follow that if no changes in the pattern of communication also occur, the particular category number should be repeated. Next, देखो the core numbers are to be written top to bottom so that the original sequence of events is pivot. देखो कौन कह ना ये जो अनुसरण करे जदि से जोगाजोगर ढांचारे कौन परिवर्तन हुए ना निर्दिष्ट बक्या संख्या पुनरावृत्ति होगा उचित कोड नंबर गुड़िक उपर कौन तल पर्यटन लेखा जा द्वारा तार घटना गुड़िकर मूल क्रम कौन होता है ना संरक्षित रही है देखो ये कौन सैंपल ऑफ एन एपिसोड देखो आप टीचर देखो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज देखो कौन कह ना ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 सेकेंड्स टॉकिंग द नॉइज डिमीन्स देखो टीचर फिर से कहे देखो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथागोरस थ्योरम देखो ये कौन है देखो ये हूँ टीचर स्टूडेंट्स मध्य कौन ना हूँ वार्तालाप कमी कौन स्टडी आम करवा हूँ लेसन प्लान नेक्स्ट देखो आम कौन आसी ना डेकोडिंग प्रोसेस आसी देखो डेकोडिंग प्रोसेस कौन रही है After encoding classroom events in 10 category system, an observation matrix consisting of 10 rows and 10 columns is to be prepared 10 into 10 matrix table for decoding the classroom verbal behaviors for constructing observation matrix. देखो ये कौन कह डिकोडिंग रे देखो ये जो प्रक्रिया होची कोन श्रेणी व्यवस्था रे जेमती एनकोडिंग श्रेणी को इवेंट 10 धाड़ी एवं 10 स्तंभ को नहीं एक संरक्षण मैट्रिक्स श्रेणी को मौखिक आचरण को डिकोड करिया पे 10 into 10 जो मैट्रिक्स टेबल प्रस्तुत करबा को हेबो पर्यवेक्षण मैट्रिक्स देखो तार जो रूल गुड़िक रही जो स्टेप गुड़िक रही देखो फर्स्ट वन हैज टू मेक श्योर दैट एंटायर सीरीज बिगिन्स and ends with the same number. The usually practice is to put the number 10 both in the beginning and the end of the series if that number is not already found at these positions. देखो एथरे कोन कहै छी निश्चित करियो पड़िबो जे समग्र सीरीज समान संख्या सहित आरंभ एवं शेष हुए साधारण अभ्यास होची कोन ना सीरीज आरंभ रे एवं शेष रे कोन ना 10 नंबर रखिबा जदि एही संख्या एही पदवी रे पूर्वरु न मिले. नेक्स्ट देखो we should take up the numbers इन पेयर्स देखो एथरे कौन रही आमर ना आम रही आम संख्या को जोड़े नेबा उचित जोड़ी करी रखा उचित देन देखो कौन ना द रो इज टू बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट नंबर एंड द कलम फॉर द सेकंड नंबर इन ईच पेयर देखो कौन ना धाड़ी प्रथम संख्या पे एवं प्रत्येक धाड़ी रे जो द्वितीय संख्या पे स्तंभ व्यवहृत होगा उचित देन देखो कौन रही ना द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कलम ए टैली मार्क्स इज टू बी मार्क्ड इन द सेल ईच पेयर शुड ओवरलैप विथ द नेक्स्ट एथरे कौन रही देखो धाड़ी एवं स्तंभर छकरे एक टैली मार्क अक्षर चिन्हित होबो प्रत्येक जोड़ी परवर्ती सहित लैप हेबा उचित देन देखो कौन रही ना सिमिलरली ऑल द नंबर्स आर ग्रुप्ड इन पेयर्स एंड इंडिकेटेड बाय टैली मार्क्स इन द 10 into 10 मैट्रिक्स एथरे कौन कह ना सही वाली जो समस्त संख्या 10 into 10 मैट्रिक्स रे टैली मार्क द्वारा सूचित जोड़ी रे ग्रुप होईची देन कौन ना द टैली मार्क आर एडेड एंड द नंबर्स आर गिवन इन द कंसर्न सेल एथरे कौन रही ना टैली मार्क जोड़ा जाय थाए एवं संख्या गुडी को लुचि रहितिबा कक्ष रे दिया जाय थाए देन देखंतु इन द एंटायर हैव बीन मेड करेक्टली देयर वुड बी tallies for the n observations that have been made. Then देखो further the sum of the column entries would be the same as that of the row entries. देखो एंट्री गुड़िक कौन ना सठिक भाव में कर पर्यवेक्षण से कौन ना n1 उच्चता रहिबो देन देखो कौन ना आगक संयोग प्रविष्ट गुड़िकर राशि सामान हेबा उचित. नेक्स्ट देखो चलतु देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स देखो देखो एथरे कौन रही ना देयर आर टू बोर्ड आस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द मैट्रिक्स देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स देखो ताको दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ क्वांटिटेटिव एनालाइज ऑफ टीचर बिहेवियर सेकेंड हूँ क्वांटिटेटिव एनालाइसिस ऑफ टीचर बिहेवियर देखो ये कौन तार मेथड गुड़िक देखो मेथड ऑफ इंटरेक्शन कैटेगरी देखो फास्ट तार कौन रही ना इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द इंटरेक्शन डाटा इन दिस द टोटल ऑफ ईच कलम एंड द परसेंटेज ऑफ ईच कलम इज कैलकुलेटेड इट हेल्प्स इन असेटिंग द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ ईच कैटेगरीज देखो परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज देखो तार केते रही देखो सेकेंड देखो कौन आमर ना मेथड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेक्शन एथरे कौन रही आमर देखो फ्लैंडर डिवाइडेड द टैबुलेटेड मैट्रिक्स इनटू 10 एरियाज नेमली A B C D E F G H I and J which helps in making an interpretation of the matrix in term of area देखो फ्लेंडर्स एरिया ऑफ इंटरेक्शन देखो लुक एट दिस पेज देखो तांकर कोन एरिया इंटरेक्शन रही देखो फर्स्ट देखो ए कौन रही आमर एरिया रही कैटेगरी कैलकुलेशन रही देखो फर्स्ट एरिया देखो ए एरिया देखो तार कैटेगरी टीचर टॉक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रही कैलकुलेशन रही एडिंग द कैटेगरीज फ्रॉम 1 to 4 देन देखो बी रे देखो टीचर टॉक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रही कैलकुलेशन रही एडिंग द परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज इन नेक्स्ट देखो
रही कौन ना प्यूपिल टॉक कौन एडिंग द परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज 8 एंड 9 डी रे देखंतु डी एरिया रे रही कैटेगरी देखंतु साइलेंस एंड कंफ्यूजन कैलकुलेशन रही यार परसेंटेज ऑफ कैटेगरी 10 इन रिलेशन टू टोटल टैलीज देन देखंतु इंडेक्स ऑफ टीचर डीलिंग विथ स्टूडेंट्स ऑन अफेक्टिव प्लेन तारो कैलकुलेशन देखंतु percentage of tallies on a block of 9 cells of 1 2 and 3 categories 1 or 2 1 or 2 1 1 1 3 2 1 ये सब तार पेयर रही नेक्स्ट देखंतु एफ रे रही सेंसिटिव देखो एफ रे रही सेंसिटिव टू डिफिकल्टीज दैट द टीचर मे फैक्ट फेस विथ रिगार्ड टू direction and criticism in the dealing with the student तार रही कैलकुलेशन कौन ना percentage of tallies in a block of 4 cells of 6 and 7 categories then देखो जी रे कौन रही टीचर्स रेस्पोंडिंग टू टर्मिनेशन ऑफ pupils talk with indirect influence आर कैलकुलेशन कौन रही ना percentage of tallies in a block of 6 cells तार रही then देखो 11 देखो कौन रही हमर सॉरी एस देखो कौन रही एस रे देखो हमर रही टीचर रेस्पोंडिंग देखो टीचर रेस्पोंडिंग टू टर्मिनेशन ऑफ pupil talk with direct influence तार देखो कैलकुलेशन रही परसेंटेज ऑफ tallies in a block of 4 cells then देखो आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट ट्राइगर्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन तार कैलकुलेशन रही रिप्रेजेंट्स ए ब्लॉक ऑफ 4 cells then देखो जे रे कौन ना सस्टेन पीपल इनिटेशन और रेस्पॉन्स वन फॉलोड बाय द अदर एथरे कौन रही कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ tallies of 4 cells देखो नोट देखो कंपैरिजन कैन बी मेड बाय कंट्रास्टिंग द proportion of G and S GH with the proportion of A and B देखो if these two proportion are quite different it may be interpreted and flexible teacher influence देखो तार सेकंड पॉइंट देखो कोन ना high loading on 4 8 and 4 9 indicates students active response to teachers questioning a high loading on 5 8 and 5 9 indicates classroom drill passes by the teacher ए सब तार रही then देखो तार कौन रही ना methods based on behavior ratio देखो different procedure are used to calculate behavior ratio but for the present the method sells for converting all column now totals to percentage next देखो हमर कौन रही नेक्स्ट देखो हमर रही टेबल फ्लेंडर बिहेवियर रेशन देखो रही एथरे कौन देखो फास्ट टीटी रे रही कौन ना टीचर टॉक रेडियो परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन टर्म्स ऑफ एक्शन रिफ्लेक्टिंग टेंडेंसी ऑफ टीचर टॉक तार फार्मूला देखो रही टीटी देखो तार रही 1 2 3 4 5 6 बाय n into 100 तार फार्मूला रही से परी 333 रो तार फार्मूला रही तार रेटियो रही इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेटियो एक्शन टेकन बाय द टीचर व्हिच एनकरेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन सेमती डीटीटी पीटी एससी आईडी पीआईआर टीआरआर रो तार फार्मूला सब रही तार रेटियो मध्यम दे देछि नेक्स्ट देखो देखो क्वालिटी एनालाइज ऑफ टीचर बिहेवियर रही कौन आमर ना द मेथड्स यूज्ड आर मेथड ऑफ क्लॉकवाइज फ्लो डायग्राम मेथड ऑफ बॉक्स फ्लो डायग्राम मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन मॉडल्स ऑफ क्रिटिकल टीचिंग बिहेवियर देन देखो आमर कौन रही ना मेरिट्स ऑफ प्याज देखो एथरे कौन रही ना आज डॉक्टर एमबी बॉस सेज इट इज ए बोल्ड step in right direction to improve the quality of education then रही कौन ना can be used as a major tool in service and pre service education programs then रही कौन ना can be used an effective feedback device for the modification of teacher behavior then रही कौन ना it is an effective tool to measure the socio emotional climate in the classroom then रही कौन ना it adds and supplements to teacher education technique like micro teaching and team teaching then कौन रही ना drawbacks of facts देखो एथरे कौन ना facts देखो studies only partial behavior of the teacher verbal interaction and overlook non-verbal behaviors then देखो it is content free just as in micro teaching then देखो equating silence with confusing is not appropriate रही देन देखो आम देखा कौन ना इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देखो तार देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नीड देखो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इज ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन व्हिच कंटेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी सच एज मटेरियल्स एंड पेज ऑफ लर्निंग आर बेस्ड अपॉन द एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल लर्नर mass instruction is the opposite that is a method in which content materials and piece of learning are the same for all students in a classroom or course individualized instruction does not require a one to one student teacher ratio देन देखो तार कौन रही प्रिंसिपल ऑफ रही देखो प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज रही जो देखो दिस मेथड रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम टू इंपोर्टेंट एसेप्ट्स इन द इरा एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन हैज कंक्लूड दैट प्लेसिंग ग्रेटर reliance upon we designed instructional materials whether audio video multimedia computer assisted instruction CAI or simply a good textbook may be as effective as the traditional lecture method more importantly it may allow some teachers to focus upon the specific needs and problems of individual students
तो नेक्स्ट देखंतु द डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन देखंतु एकर डिफरेंस देखिया चलंतु फर्स्ट देखंतु इंडिविजुअलाइजेशन रो देखंतु फर्स्ट पॉइंट देखंतु ये सेम ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल लर्नर्स इंडिविजुअलाइजेशन होइतला बेले पर्सनलाइजेशन कोन ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच लर्नर्स होई जाय देन देखंतु इंडिविजुअलाइजेशन अप्लाइंग ऑफ डिफरेंस डिडक्टिव स्ट्रेटजी टू अचीव द की कॉम्पिटेंस से पर्सनलाइजेशन कोन ना अप्लाइंग ऑफ डिफरेंस डिडक्टिव स्ट्रेटजी टू प्रमोट द पर्सनल पोटेंशियलिटी then देखंतु कोन अछि इंडिविजुअलाइजेशन ने द एजुकेशनल करिकुलम इज डिफाइंड बाय द एजुकेशनल स्टाफ then देखंतु पर्सनलाइजेशन ने कोन अछि हमर द लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन करिकुलम then देखंतु हमर valorization of the cognitive dimension of the learner valorization of all dimension of learner not only the cognitive emotional social life experience etc then देखंतु रही कौन इंडिविजुअलाइजेशन रही कौन ना वैल्यूराइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल आउ एथरे कौन रही हमर पर्सनलाइजेशन रे कौन रही ना वैल्यूराइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज कॉम्पिटेंस लाइफ वर्क स्किल आल्सो इनफॉर्मल देन देखंतु लर्नर सेल्फ डायरेक्शन एज एन एक्सेसरी स्किल लर्नर सेल्फ डायरेक्शन एज ए फंडामेंटल स्किल टीचर हैज ए की रोल ट्यूटर हैज ए की रोल पर्सनलाइजेशन ने ट्यूटर हैज ए की रोल एथरे कौन ना इंडिविजुअलाइजेशन ने टीचर हैज ए की रोल देन देखंतु प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखंतु एतरे कोन रही ना बीएफ स्किनर कंडक्टेड रिसर्च फॉर देखंतु एतरे कोन रही ना बीएफ स्किनर कंडक्टेड रिसर्च फॉर नंबर ऑफ ईयर टू नो हाउ लर्निंग टेक प्लेस ही यूज्ड रेज pigeons etc as subject in his laboratory he found that whenever a living organism emits a correct response we can reinforce it or strengthen it by rewarding that organism immediately Skinner's demonstrated that almost any sequence of activities however complex could be taught to an animal provided it was within the physical capability of that animal by breaking it down into very small steps and teaching each step in the sequence in turn by rewarding or reinforcing it each time the animal performed it then देखंतु तार देखंतु डेफिनेशन देखंतु Smith and Williams कौन कहते देखंतु programmed instruction is a planned sequence of experience leading to proficiency in terms of stimulus response relationship that have been proven to be effective then देखंतु Smith and Moore कौन कहते 1962 रे programmed instruction is the process of arranging the material we learned into a series of sequential steps usually it moves the study from familiar background into a complex and new set of concepts principles and understanding then देखंतु कौन रही ना लेथ रे कौन रही 1966 रे the program is a sequence of small steps of instructional material called poems most of which require a response to be made by completing a blank space in a sentence to ensure that expected response are given a system of queuing is applied and each response is verified by the provision of immediate knowledge of results then देखंतु principle of program instruction रे कौन रही हमर देखंतु programmed learning has no a new pair towards automation and individualization of instruction they largely solve the problem or individual differences provided the following principles are used देखंतु तार केते गोटे पॉइंट रही देखंतु फर्स्ट पॉइंट होची प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप रही देन रही प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पोंडिंग लर्निंग बाय डूइंग रही थर्ड पॉइंट रही प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग रही फोर्थ पॉइंट रही प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन और फीडबैक देन रही प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग ना फर्स्ट कोन ना स्मॉल स्टेप रही तापर एक्टिव रेस्पॉन्स तापर सेल्फ पेसिंग इमीडिएट कन्फर्मेशन फीडबैक रही देन रही स्टूडेंट टेस्टिंग रही then देखिबा चलंतु styles of programming देखंतु the programming is usually presented by a book or machine a program is defined as the subject matter that is to be learned by the pupils via the machine or other device देखंतु तार केतोडे पॉइंट देखंतु फर्स्ट देखंतु some of the program style are फर्स्ट देखंतु linear और extensive programming Skinner कहचंती सेकंड रे branching और interesting programming जो हेटा नॉर्मन क्राउडर तापर मैथमेटिक प्रोग्रामिंग जे गिलबर्ट ए देन देखंतु रूलेट और एक रोल सिस्टम ऑफ प्रोग्राम को ग्लास्टर इटाल कहचंती रिप्रेजेंट्स इन इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच देन देखंतु कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सीएआई लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एलसीआई देन देखंतु तार कोन रही ना फर्स्ट रही लाइनर प्रोग्रामिंग रही देखंतु दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इज एसोसिएटेड विथ द वर्क ऑफ डॉक्टर स्किनर एंड डॉक्टर होलैंड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इट स्प्रिंग्स फ्रॉम their of operation conditioning it is also called straight line program single track program construct response type program extensive type program then देखंतु हमर कोन रही
देन रही देखो ब्रांचिंग program देखो the branching programs were developed by Norman A. Crowder, so it is also known as Crowderian model. Crowder has given it definition as follow: it is a program which adapt to the needs of the students without the medium of extensive device as computer. देखो प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग देखो तार एक्सपोजिशन देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लर्नर इज अलाउड to view the whole situation before the proceeds to answer. Hence the whole concept is presented in paragraph or in more pages. Second column principle of diagnosis रही the multiple choice format is used to diagnose the weakness of the learner. Then रही the principle of remedy. If the learner gives wrong answer, he is taken to remedial frame where remedial instruction is provided him. देखो तार फीचर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को रही देखो तार फीचर गुड़िक ना द सब्जेक्ट मैटर इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स एंड with a frame range from 1 to 2 paragraphs or even 1 page. Then the pupil is required to make a choice out of several choices as multiple choices questions are asked. Then each response to the question is keyed to different pages. तब देखिए देखो comparison between liner branched programming देखो liner programming तब branched programming देखिबा तारो तार फर्स्ट पॉइंट कौन रही लाइनर प्रोग्रामिंग रे फर्स्ट पॉइंट रही प्रोपागेटेड बाय बीएफ स्किनर ब्रांच प्रोग्राम रे रही प्रोपागेटेड बाय नॉर्मन ए क्राउडर देन देखंतु लाइनर प्रोग्रामिंग रे रही इट इज बेस्ड ऑन स्किनर ऑपरेंड कंडीशनिंग सेपरी ब्रांच प्रोग्रामिंग रे रही बेस्ड ऑन configuration theories. Then देखंतु based on principle of small steps, principle of active responding, principle of immediate confirmation, principle of self pacing, principle of student testing हमरो लाइनर प्रोग्राम रे होइतबा बेले branched programming रे रही कोन ना based on principle of exposition, principle of diagnostics, principle of remedy. Then देखंतु small step रही कोन देखंतु small step frame size is less than देखंतु 50 to 25 words or 1 or 2 sentence. एतरे कोन रही ना large step frame in 1 or 2 paragraph of even a page. देखंतु सेहि परि लाइनर प्रोग्रामिंग रे कोन रही ना number of step are last आ हमरो branched programming रे रही frame structure is stimulus response remedy reinforcement. हमरो एतरे कोन रही the frame structure is stimulus response reinforcement. 7 point देखंतु लाइनर प्रोग्रामिंग रे types of frames 4 types in introductory teaching practice and testing frames. हमरो branched programming रे कोन रही types of frames रे 2 types home page teaching and diagnosis wrong page remediation is given. देखो तापर कोन रही 8 point रे constructed response type देखो fill in the blank type responses are controlled by the programmer purpose of response is fixing of learning immediate confirmation of correct response wrong response is ignored. तापर देछि कोन एपटे multiple choice type responses are controlled by learner purpose of response is measurement diagnostic or learning confirmation approval correct response wrong response is remedial. Then देखो कोन रही हमरो लाइनर प्रोग्रामिंग रे suitable to lower class branched programming रे रही suitable to higher class देखो एतरे suited to arrange and people of low IQ एतरे कोन रही हमरो suitable for gifted and creative people हमरो रही branched program रे सेहि परि देखंतु लाइनर प्रोग्रामिंग रे कोन रही ना test knowledge and understanding objects pages are is sequential usual textbook style teaching machine cheap model printing is cheap when compared to branched type more useful in concept formation used to teach fact definition and core skill extensive type of programming तापर हमरो देखंतु branch programming रे कोन रही Now first is suitable for gifted and creative people, test higher order objectives, analysis, problem solving, etc. Then देखो pages are not sequential, zigzag type, scrambled book, computer costly type, printing branching type is costly, more useful in concept comparison, used to teach other than facts and basic skill, depth of the subject is given importance. तापर कोन रही ना intrinsic type of programming हमरो रही तापर देखंतु डेवलपिंग प्रोग्राम देखंतु एथरे कोन रही हमरो one of the innovations in the field of educational thought and practice is programmed learning or programmed instruction. This is a method of self study. The learner is enabled to acquire some knowledge with the help of what is called a program. देखंतु the different phases in developing a program are discussed here. देखंतु फर्स्ट तार पॉइंट कोन रही हमरो preparatory stage रही preparatory stage रही देखंतु तार रही selection of the topic रही कोन ना the unity content or topic is to be task analyzed in view. The content is divided into small steps and sequences. तापर कोन रही तार ना decision regarding the target group the liking disliking interest attitudes of pupil for whom the program is to be prepared should be considered prerequisites for learning the program should be decided. Then देखंतु कोन रही ना writing objectives in behavior रही writing entry behavior of the learner रही तापर रही कोन हमरो developing
specific outline of the content to be programmed, preparation of pre-test and post-test रही then देखो tags analysis of the content रही the content we want to teach is split into a number of tiny bytes of steps and are arranged in logical sequence. Then देखो three types of editing देखो कौन रही ना technical accuracy edit रही technical edit रही composition individual tryout रही small group tryout field testing रही तापर देखो आम कौन पढ़ा ना advantages of program instructional learning आज आम पढ़ा देखो एथेर कौन रही learning is more effective in PL since the learners is continuously active. Second point कौन रही ना paves the way of individualized instruction thus paves the way of individualized instruction. Then कौन रही once the program is prepared and tested on pupil it can be used at any time and at any place. तापर कौन रही ना develops good habits in pupil self confidence self reliance honesty etc. अब कौन रही ना since the program is developed by expert and creative teacher it provides quality teaching to pupils. Then देखो कौन रही आमर limitations of programmed learning देखो एथेर कौन रही ना teacher occupies an important place in the teaching learning process but there is no direct place for teacher in this. Then देखो कौन रही ना teacher taught relationship is important but through programmed learning it is not strengthened. Then देखो preparation of programmed learning materials is quite expensive. Then देखो it cannot foster proper attitudes aesthetic appreciation moral standards etc. Then कौन रही ना programmed learning does not help in development of imagination in pupils रही. Then देखो challenges in integrating ICT in school education देखो technology integration देखो कौन रही आमर ना technology integration is a term used by the educators to describe effective use of technology by teachers and students. Example देखो कौन रही ना educational technology includes hardware computers handheld device printers digital camera etc. software and content application programming classes productively software and media internet and video conferencing. तापर देखो कौन रही ना रेसिस्टेंस ऑफ चेंज रही कौन ना रेसिस्टेंस इज कॉमनली विटनेस्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग द इंट्रोड्यूस ICTs into schools very often from the teachers themselves since they may be of the opinion that they shall become redundant once technology comes in or due to their perception that is too late for them to adapt to a new environment. Then देखो lack of awareness कौन रही आमर ना lack of awareness रही there is a generally lack of awareness about the utility of ICTs in education as well as about ICTs at our disposal and how they can be assessed and utilized and economically and effectively. Then देखो कौन रही ना language barriers रही English is the dominant language of the internet and estimated 80% of online content is in English. A large proportion of the educational software produced in the world market is in English. Then देखो capacity building of teachers देखो कौन रही एथेर in most of our schools the teachers are overloaded less motivated and inadequately trained and often deal with inconvenience working conditions. Then देखो कौन रही ना monitoring and evaluation. Many of the issues and challenges associated with ICTs in education initiatives are known by policymakers, donors, staff and educators. However, data on the nature and complexity of these issues remain limited because of the lack of good monitoring and evaluation tools and process. Then देखो internet uses monitoring students. तो ये थिला आपण मानकर बीएड फर्स्ट सेमिस्टर ICT यूनिट 2 पेपर थिला आई होप आपण मानको भलो लागिवो लाइक शेयर कमेंट करिया को भी जमर भी बोलंती नहीं जदी चैनल को नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु जहा फल रे आपण माने एपरी नुआ नुआ वीडियो पाई परिबे थैंक्स फॉर वाचिंग।